Good morning, students. As we have studied in our previous class, that what are charges, what are their properties, they repel and attract each other. Means the charged bodies can repel or attract each other, but up to what limit? So in this chapter, we will study what is electric field. They describe up to what extent a charge can repel or attract another body, and how the electric current flow and what is electric circuit. मान लीजिए कोई चार्ज बॉडी है हमारे पास और उसके पास में कोई दूसरी चार्ज बॉडी आ जाती है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये दूसरी चार्ज बॉडी है वो कितनी दूरी तक इसका ये फोर्स एक्सपीरियंस कर सकती है। अब इसको हम एक जनरल एग्जांपल जैसे कि मैग्नेट का लेके कर सकते हैं, क्योंकि मैग्नेट हमारे लिए वेल नोन है। तो अगर मान लीजिए हम एक मैग्नेट रखते हैं और उसके आसपास हम कोई आयरन ऑब्जेक्ट रख देते हैं, जैसे आयरन फाइलिंग्स हम उसके आसपास डाल देते हैं, तो अगर हमने आयरन फाइलिंग्स को बहुत दूर रख दिया है तो वो उस मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगी। पर जैसे जैसे हम एक लिमिट तक उसके पास उसको लाते जाते हैं वो इजीली उससे अट्रैक्ट हो जाती है। इसका मतलब है ये जो मैग्नेट है उसके चारों तरफ एक लिमिट है जहाँ पे वो आयरन फाइलिंग्स जो हैं वो एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रही हैं और उससे अट्रैक्ट हो रही हैं। उसी तरीके से जो चार्ज पार्टिकल है उसके चारों तरफ भी एक लिमिट तक स्पेस होता है, जहाँ पे अगर कोई उस स्पेस की लिमिट के अंदर अगर कोई पार्टिकल आ जाता है तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अदरवाइज अगर वो उस लिमिट के बाहर है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा। तो इस टर्म को समझाने के लिए ही हम एक वर्ड यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा कि अभी हमने कहा, तो हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? द स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब उसके चारों तरफ का वो स्पेस वेयर अटैच्ड चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स, उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। Now we will take the next topic, how the electric charge flow through a conductor. Means what is the reason behind it? इसको समझने के लिए पहले हमें कुछ टर्म्स समझनी पड़ेगी, जैसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर हम इन टर्म्स को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे तो इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो या इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है वो इजीली समझ जाएंगे। अब हम पहली टर्म समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम अगर यहाँ देखें तो ये हमारा एक चार्ज है Q और इसके चारों तरफ का ये स्पेस आप देख सकते हैं जहाँ तक कि ये अपना इन्फ्लुएंस रखता है, यानी कि जहाँ पर अगर कोई और दूसरा चार्ज आ जाएगा तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, यानी कि ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मान लीजिए इन्फिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जितना वर्क करते हैं, मान लीजिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इसको, ये जो हमारा यूनिट चार्ज है इसको हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आए, कौन से पॉइंट तक? P पॉइंट तक। तो इसको यहाँ से इन्फिनिटी से इस पॉइंट P तक लाने के लिए हम जितना वर्क करेंगे दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। इसका मतलब है किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने में किया गया जो वर्क है वो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अब अगर हम एक चार्ज लें और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें तो इस तरीके के बहुत सारे पॉइंट्स होंगे और हर पॉइंट का अपना अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा।
अब मान लीजिए हम इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 2 पॉइंट्स कंसीडर करें, तो किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए, एक यूनिट चार्ज को वहाँ तक लाने के लिए जो हम वर्क करेंगे, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस. So the work done to bring a unit positive charge from one point to another point in an electric field is called potential difference. The SI unit of electric potential and potential difference is volts, denoted by V. And the potential difference is measured by using an instrument called voltmeter. The voltmeter is always connected in parallel between the 2 points where the potential difference is to be measured. The resistance of voltmeter is always high. An ideal voltmeter has infinite resistance. So what is the reason behind this, that the resistance of a voltmeter is high? So if when we connect the voltmeter in a circuit to measure the potential difference between the 2 points, it should draw the negligible current from the circuit. अब हम दोनों टर्म्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस अच्छी तरीके से समझ चुके हैं. अब ये दोनों टर्म्स यूज़ करके हम इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे फ्लो करता है ये इजीली समझ सकते हैं. Now let's try to understand this with an easy example. If we take a pipe which is filled with water, if both the ends of this pipe are at the same level, we will see that water is not flowing anywhere. But if we tilt this pipe and makes this end at the higher level than this end and maintain a difference in between them, we can easily see that the water is flowing from this end to this end. इसको हम एक और एग्जाम्पल लेकर समझ सकते हैं. So in this example, if we take 2 tanks filled with water, A and B, and they are connected through a pipe. So we can see that in tank A the pressure is higher, but in tank B the pressure is lesser, and I think we know the reason. So the water will flow from this A tank to B through this pipe, means from higher pressure to lower pressure. So if we consider the pressure as electric potential and the water as charges. So in this example we have seen that the water is flowing from higher pressure to lower pressure. So according to this, the charges are flowing from higher potential to lower potential. So we can conclude that the charges will flow when there is a potential difference between the 2 points. अब हमें ये तो पता चल गया है कि 2 पॉइंट्स के बीच में चार्जेस के फ्लो के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना ज़रूरी है. पर ये जो पोटेंशियल डिफरेंस की जो हम बात कर रहे हैं वो मेंटेन कौन करता है? इसके लिए हम सर्किट में सेल या बैटरी का यूज़ करते हैं. जब भी हम किसी सेल या बैटरी को सर्किट में लगाते हैं वो उनमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है या मेंटेन कर देता है. अब सेल में हमें अच्छी तरीके से पता है कि जो सेल होता है उसके अंदर केमिकल्स होते हैं जिनके अंदर हमेशा केमिकल रिएक्शन होती रहती है. और ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो केमिकल रिएक्शंस ही जो है वो सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने का
काम करती हैं. Let's understand electric circuit. So in simple way, the closed and continuous path of electric current is called electric circuit, which consists of a cell or a battery, a key, electrical components and connecting wires. So whenever we have to represent an electric circuit, we use some symbols. Now look into all these symbols. So here are some components and their symbols. First is an electric cell, which is represented by two bars. One is bigger and the second is smaller. So the bigger bar represents positive terminal and the smaller bar represents negative terminal of the cell. The second is a battery, which is a combination of cells. So here we can see there is one cell, second cell and third. When we connect them, the one cell should be connected with other cell in this manner that the negative terminal of first cell should be connected with the positive terminal of the next one, and so on. Then next is the plug key, or generally we call it switch. It is represented in this manner, and here we can see that this key is open because there is no dot in it. There is only a simple bracket. Then the next is plug key or a switch, which is closed. To represent a closed switch or key, we just put a dot in this bracket. Then the next is a wire joint. To show the jointed wire, we show them like this with a joint. The next is wires crossing without joining. They are only overlapping but they are not jointed. So here there is a one wire and this is the overlapped wire, so there is no joint. The next one is electric bulb and it is shown by this symbol. Next is a resistor of resistance R. So you can see this zigzag line which shows the resistor. The next is variable resistance, which is also called rheostat, and you can see the two symbols of rheostat. The next thing is ammeter, which is denoted by this circle and A written in the middle of this circle, and the 2 points positive and negative are shown. For voltmeter, we make a circle and V symbol in V. Let's have a recap what we have studied. So first point is electric field. The space around a charged particle within which electric force due to it can be experienced by a test charge. The next is electric potential. The electric potential at a point in an electric field is defined as work done in moving a unit positive charge from infinity to that point. It is denoted by V and the SI unit is volt, and it is named after Alessandro Volta. Now come to the next point, potential difference. It is same as electric potential, but there is some difference.
It is the amount of work done in moving a unit positive charge from one point to another point in an electric field. So the potential difference is equal to work done upon total charge. So if the potential difference is denoted by V and the work done is W and the total charge is Q. So V is equal to W upon Q. Now let's define 1 volt. If we want to make it 1 volt, we have to make it 1 joule and this 1 coulomb. So according to this, we can define 1 volt. That 1 volt is the potential difference between 2 points in a current carrying conductor when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another. And the potential difference is measured by voltmeter, and the voltmeter is always connected in parallel across the 2 points where the potential difference is to be measured. Now you can see in this diagram that if we want to measure potential difference between A and B, we have connected this voltmeter in its parallel. Now the voltmeter has very high resistance so that it can draw a negligible current from the circuit, and an ideal voltmeter has infinite resistance. Now come to the next point, flow of electric charge. The chemical reaction within a cell produces a potential difference in the circuit which sets the electron in motion in a particular direction. Potential difference is set across the terminals of a cell even when no current is drawn from it. इसका मतलब है कि एक सेल में हमेशा ये पोटेंशियल डिफरेंस बना रहता है. अगर हम उस सेल को सर्किट में नहीं लगाते हैं तब भी उसमें ये पोटेंशियल डिफरेंस बना रहता है. In order to maintain electric current in a circuit, the chemical energy stored in the cell is continuously spent. जब भी हम किसी सेल को किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में लगाएंगे तो उसके अंदर जो केमिकल एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल कंपाउंड्स वो हमेशा यूज्ड अप होती रहेगी, जिसकी वजह से उस इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट मेंटेन होता रहेगा. Now what is electric circuit? A continuous and closed path of an electric current is called electric circuit. It consists of a source of electrical power, which may be a cell or a battery, a plug key, electrical components, and connecting wires. Let's do some numericals. First is how much work is done in moving a charge of 3 coulomb across 2 points having a potential difference 15 volts. So first of all we will write what is given. So charge is denoted by Q. So Q is 3 coulomb and the potential difference V is 15 volts, and we have to find out work done. So according to this, V is equals to W
upon Q. So W is equal to V multiplied by Q, and put the values. W is equals to V 15 multiplied by 3 is equal to 45. Because this is verb, the unit is joule. Now come to the next question. Calculate the amount of work done in bringing a point charge of 8 microcoulomb from point A to B if electric potentials are 2 volt and 4 volt respectively at A and B. Now let's do with writing what is given. So the 8 microcoulomb charge is given. Q is 8 microcoulomb. So first of all, convert it in SI unit. 8 multiplied by 10 raised to power minus 6 coulomb. And the potentials of 2 points are given. So here we'll take delta V, means the difference of these potentials, that is 4 minus 2 is equal to 2 volt. Now calculate the work done, that is Q multiplied by delta V, and W is equals to 8 multiplied by 10 raised to the power minus 6 multiplied by 2, and the answer is 16 into 10 raised to the power minus 6, that is also called 16 microjoule.